स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू के इस बहुत ही स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। जी हाँ, CSE 2023 की वन ऑफ द टॉप रैंक 79 ईशानी आनंद आज मेरे साथ हैं। उनके साथ हम उनकी जर्नी जानेंगे और अलग अलग सवाल जो है वो उनसे पूछेंगे, उनकी प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। तो ईशानी, वेलकम टू दिस सेशन। Thank you so much, sir. Thank you for having me. सो ईशानी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, यू आर वन ऑफ द टॉप रैंक्स इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जाम। हाउ डू यू फील? Sir, I think time लगेगा sir for the feeling to sink in कि अभी पढ़ना नहीं पड़ेगा. Just that studies had become like a daily habit, sir. तो अभी थोड़ा time लगेगा sir break लगाने के लिए. ओके। सो ईशानी, जब आपको पता लगा था कि आपका रैंक 79 आया है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? जस्ट वांट टू नो दैट। सर मैंने PDF खोला सर आफ्टर लाइक 10 seconds ऑफ लॉट ऑफ प्रिपरेशन की नहीं होगा तो इट्स ओके, वी विल गिव इट अगेन. बट फिर ओके। 66 तक मेरा नाम मुझे दिखा नहीं था. आई चोज नॉट टू सर्च यूजिंग द कंट्रोल F बिकॉज आई डिडंट ओके। वांट टू गेट डिसहार्टेंड. तो मैंने यस। 66 तक देखा सर. फिर आई गॉट लिटिल सैड कि अब शायद होप कम हो रही थी सर विद एवरी रैंक. एंड देन सडनली ओके। आई सॉ माय नेम स्क्रॉल करके एंड देन आई जस्ट टोल्ड माय मदर, साथ में थी मेरी, कि मम्मा ओके। हो गया. एंड देन आई थिंक मेरे से ज्यादा खुशी उनमें दिखी मुझे. शी वाज वेरी हैप्पी सर. एंड I'm sure. I think that's one of the most special feelings that an aspirant can get actually. तो ईशानी यार, थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करते हैं। मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर IAS? Sir, I had decided very early in my life कि I wanted to do some occupation जिसमें मेरा perspective बहुत broad हो सर, थोड़ा people oriented भी हो. तो फिर my father's also in the services, तो मैंने उनकी देखी journey, the capacity to work, थोड़ा सा उनसे motivation ली थी सर मैंने. और स्कूल में तो द ड्रीम वाज वेरी प्रिकॉशियस, छोटी सी ड्रीम थी. एंड देन एज आई वेंट टू यूनिवर्सिटी इट केप्ट गेटिंग बिगर एंड बिगर. आई एम अ CS इंजीनियर सर, कंप्यूटर साइंस करा है मैंने. एंड व्हेन आई डिड गेट ऑफर्स फॉर better job somewhere, I didn't feel that they were lucrative for myself, sir. I think मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी अपनी मेंटल फैकल्टीज और कंपैशन और ये जो क्वालिटीज मुझे लगी सर, आई फेल्ट दैट सिविल सर्विसेज कुड बी अ गुड courageous decision I could take. And after university सर मैंने शुरू किया. जस्ट करती गई सर. उसके बाद आई थिंक आई न्यू कि शायद someday there could be a ray at the end of the cave. But I went on sir from the journey. तो ईशानी, सिंस यू मेंशन दैट योर फादर वाज इन सर्विस, तो उनकी लाइफ और उनका करियर देख के हाउ डिड दैट इम्पैक्ट यू? मतलब उसने कैसे इन्फ्लुएंस किया आपके इस डिसीजन को? Sir, his career has always been around me. Of course, I would hear a lot of the developmental work he did and field पे कैसे काम करना है sir, with people very different from different backgrounds. जो large network होता है self help groups का, पंचायत का. So I was growing hearing this vocabulary in my house also. So somewhere I felt that I'd be very comfortable to go back here and also give back to society in many ways. So, but apart from that, I do understand the sort of qualities that the services demand from you. A lot of emotional intelligence, grit, determination. Sir, ये सब मुझे पता चला कि the job is not just about the paraphernalia or something external, but more internal. To prove to yourself कि हाँ मैं कर सकती हूँ. Because every decision is very hard. तो ये थोड़ी मेरी internalization थी sir throughout seeing my father's journey. And hopefully I can build more on these qualities in the job now, sir. तो आई एम श्योर सिंस योर फादर वाज अ सिविल सर्वेंट, एक सॉफ्ट प्रिपरेशन काफी पहले से स्टार्ट हो गई होगी आपकी, बिफोर यू एक्टिवली स्टार्टेड प्रिपरेशन। Sir, वाज इट सो? sir, no, sir, I don't think so because I feel that UPSC is an equalizer in every way. या। But I think जो पर्सनल लाइफ कैसी होती है उसको कैसे बैलेंस करना है घर पे, आउटसाइड, द प्रेशर्स ऑफ सो मेनी स्टेक होल्डर्स, आई थिंक दिस आई हैव सीन अप क्लोज सर. तो जो मैंने एथिक्स में लिखा है written from a very close heart, so I've seen that pressure. So I think I was a good judge of the life of a civil servant. Okay, sure. So, Eshani, so let's talk about the time when your preparation journey actually started. So, when did you give your first attempt? So in 2020, I'd given my first attempt and it had Okay, got और postponed by उसमें क्या हुआ 2020 में? तो बहुत मेहनत करी थी मैंने 2019 से. एवरीथिंग बाय द बुक वाज परफेक्ट सर. सोर्सेज, टेस्ट सीरीज, जो भी टॉपर्स ने कहा था मेरे पहले सब कुछ किया मैंने.
ओके। बट मेरा 2 घंटे का जो पेपर था सर, उसमें आई वाज सो अंडर प्रिपेयर्ड। आई न्यू कि मुझे एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल थी ही नहीं। तो हम्म। आफ्टर आई फिनिश दैट 2 hours ऑफ पेपर, घर आई रोट एवरीथिंग कि हर क्वेश्चन में क्या मैंने सोचा था, व्हाई आई वेंट रॉन्ग। और हम्म। फिर मुझे लगा कि दिस अटेम्प्ट आई एम नॉट क्लियरिंग। तो आई वाज वेरी डिसहार्टेंड। देन आई वेंट बैक सर टू माय फर्स्ट प्रीलिम्स। फिर 21 में मेरा क्लियर हुआ, पर मेरा मेंस रह गया था सर। जबकि ओके। मेरा score was good sir in many papers, but somehow very bad in some other papers. So मेरा mains रह गया था sir, and then I went again in 22, cleared all three, got in the Indian Revenue Service, and this is my fourth attempt sir. So 2019 से this has been my journey. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू मेड एक्चुअली, कि पहली बार जब आपने एग्जाम दिया यू कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, है ना। एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट दिया होगा एंड दे कुडंट क्लियर। तो आई Hmm. थिंक दैट्स नॉट रियली द एंड ऑफ जर्नी। आई थिंक Hmm. रादर देन जस्ट गेटिंग डिजेक्टेड बाय दैट, Hmm. मोर इम्पोर्टेंट इज व्हाट यू डिड एक्चुअली, कि एनालाइजिंग योर प्रिपरेशन डीपली, कि भाई क्या गलत किया, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, क्या वीक एरियाज थे, एंड ट्राइंग टू फिक्स दैट। Yes sir. So I think that's a really good thing that you did, because many people actually tend to fall after that. Yes sir. एंड सेकेंड अटेम्प्ट की बात करते हैं, सिंस यू मेंशन्ड कि दूसरी बार आपको मेंस लिखने का मौका मिला, बट Hmm. यू कुडंट क्लियर मेंस। तो Hmm. मेंस में किस तरह के चैलेंजेस यू फेस्ड, मतलब व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? So first in 21, I was happy कि prelims हो गया. So in some ways, I had cracked the mistakes I had done last time. तो उसकी तो I was very happy. And then when I saw my list that अभी mains prepare करना है, I think I got lost in the web of बहुत content. सब जगह से content ले लो. I kept doing that, sir. I did not do a lot of answer writing. I didn't structure my answers very well, even though I knew I could write good answers. तो मैंने ये मेरा change किया, sir, between the two mains. I did more answer writing. I structured my introduction and endings, और PYQs पे ज्यादा फोकस किया था सर मैंने. So it was again more internalization. मैंने GS का पेपर लिया, लिखा कि what were the points I had written, why I did not get such scores. Again sir, the same learning curve of prelims was repeated in mains. आई थिंक काफी एक ऑर्गेनिक जर्नी है, जैसे आपने बताया कि चीजों को माइन्यूटली देखा, समझा, एंड यू kept on fixing that. I think that's a very, very important takeaway to all those aspirants listening to this interview. So what I want to add, And sir, I yeah, meant that incrementally I've improved, sir. ऐसा नहीं था that one level में एक बार में मैंने सारा कर लिया. I yes. made sure I didn't repeat the same mistakes. I may have made newer ones, but I didn't repeat the same mistakes. Or accepting that I didn't do some question well was the most important change in my attempt, sir. बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक अगेन यू सेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि आंसर्स की आइटरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू कीप इंप्रूविंग योर आंसर ऑन आंसर, मतलब एवरी सेकंड आंसर इज बेटर देन योर फर्स्ट आंसर। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग द मेंस एग्जाम। और ईशानी, लेट्स कम टू द थर्ड अटेम्प्ट, उसमें क्या हुआ? सर उसमें आई वाज अगेन वेरी एक्साइटेड कि मेंस हो गया मेरा. तो एवरी टाइम आई क्लियर्ड वन लेवल, आई वाज जस्ट very happy with these small successes, sir. I have not repeated the same mistake. And then interview comes, which is a very different round altogether, because they're not checking content alone. You're Yes. presenting yourself as a package, who you are completely bare to the panel. So in my first interview, sir, I had done again everything by the book. मैंने DAF बहुत अच्छे से देखा था. I put all my hobbies, knew everything about them. But even then, when I entered my first interview, I was quite anxious because I didn't know how the interview works. I was a little scared, sir, even though I had done public speaking before. But somewhere, I think the board also made me comfortable, and I went ahead with it. और मेरे 182 आए थे सर उस साल. बट दिस ईयर आई सेड कि इंटरव्यू भी मैं अलग से कुछ करूंगी. सो मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे, सब कुछ आंसर जो दिया था वो दिखाया सबको कि ये ठीक है, ये गलत है, क्या करना है. एंड दिस ईयर सर आई स्ट्रक्चर्ड माय आंसर्स मच बेटर. एंड अगेन विद आनंद स्वरूप सर एट स्टडी आईक्यू, आई वाज अ पार्ट ऑफ द सेम. तो उन्होंने भी कहा था कि आर्टिकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई इम्प्रूव्ड अ लॉट इन माय सेकंड इंटरव्यू आल्सो, and I got 198, sir. So again, an incremental change in a different level. I think that has made a difference for me.
यस, आई थिंक दैट चेंजेस अ लॉट, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर कैंडिडेट्स दे काम की सर मैं मतलब कैसे एक इतना बड़ा मार्क्स में जंप कैसे लेकर आऊं, बट दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस एक्चुअली। मतलब इट्स द स्लोली वो इंक्रीमेंटल गेन्स जो आप करते हो डेली मेहनत करके, दैट इज व्हाट इट काउंट्स। तो थर्ड अटेम्प्ट के बाद वर यू एलोकेटेड अ सर्विस, वर यू एबल टू क्लियर द एग्जाम फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में? Yes, sir. I was given the Indian Revenue Service. मेरी ओके, रैंक थी 291 ओके। एंड उसके बिल्कुल 3 दिन बाद प्रीलिम्स का एग्जाम था. आई जस्ट वेंट अहेड एंड गिव इट. फिर मेरा क्लियर हो गया था सर अगेन. तो So मैंने जो did you join 20 the service at that time? सर आई स्किप्ड द फाउंडेशन कोर्स एंड आई Okay, जॉइंड इन नवंबर. बट मैंने उससे okay, ईओएल ले लिया था सर, बिकॉज आई okay, थॉट कि इस साल शायद लिखना पड़े 24 का. okay. ठीक है। तो ईशानी, अब थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, सिंस यू मेंशन इन वन ऑफ योर आंसर्स कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन इज मेजरली अबाउट मैनेजिंग दैट ह्यूज लोड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हाउ डिड यू गो अबाउट दैट? सर लाइक यू मेंशन देयर इज अ mammoth of content everywhere. सब जगह से इंफॉर्मेशन आती है, सोर्सेज, टीचर्स, मेंटर्स, करंट अफेयर्स, बहुत सी चीजें होती हैं. सो आई थिंक आई हैड अ वेरी टेक्निकल अप्रोच टू इट. आई हैड मेनी पैरेलल्स, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, जीएस हो गया, जीएस के अंदर मेनी सब्जेक्ट्स, उसका मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एथिक्स, और ऐसे पैरेलल्स बनाए थे सर. फिर सबका सोर्सेज लिखा. I was not the person who could say confidently कि मैं एक ही source पढ़ूंगी. I think I took 1 week to fish everything in the market. I have done that, but I made very, very short, crisp notes, very comprehensive notes of everything in the market, sir. ऐसा भी नहीं था, it was the 10 books together, but maybe 2 or 3 good sources which I felt I should keep. But sir, I put a lot of myself in these notes. I researched information on my own. कहीं paper से लिया, कहीं दूसरी book से लिया. जैसे ethics का जो था, we have standard textbooks, but I think I fished a lot of my own examples, and I do enjoy reading philosophy, stoicism, a lot of this. तो मैंने अपना बहुत input दिया सर हर पेपर में. And as I would fail a particular paper, I would see कि जैसे GS3 में क्या दिक्कत हुई मेरी, then I would go back and make that content better. तो ऐसे हर सब्जेक्ट का डिफरेंट था सर अप्रोच, बट आई ट्राई टू मेक इट इजियर फॉर मी. कंटेंट देखा, छोटे नोट्स बनाए, उसको रिवाइज किया सर. दिस वाज माय स्ट्रेटजी. ओके। और ईशानी, मतलब आज के टाइम पे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में एक यूट्यूब बहुत बड़ा कंपोनेंट हो गया है। मतलब व्हाट रोल डिड यूट्यूब प्ले इन योर प्रिपरेशन? Uh, sir, little allied concept. I was away from social media completely. Only YouTube was one channel which I took some assistance from. एक था sir, study IQ's current affairs. Whatever was anything that was in the news today, I would try to see and try to remember it, sir. तो उसके current affairs का मैंने देखा. Second thing is, sir, I stayed away from a lot of the motivational channels, a lot of the topper talks. Yes, sir, I didn't see much later because I felt like it may not help me now after I'd understood the exam. But sir, motivational videos in terms of meditation, how to cement yourself internally, how to be a strong person, I think this kept me going. Apart from that, I saw many channels like School of Life. ये तो I used to see a lot, sir. I think it was more for me to enjoy what could supplement my prep than keep me going alone. And current affairs तो मैंने online देखा था sir, a lot of the videos. ओके। तो स्टडी आईक्यू में आपके फेवरेट एजुकेटर्स कौन से हैं? There's so many, sir. I like Ankit Agarwal sir a lot ओके, because he comprehensively explains a lot of the topics, sir. So I knew कि जो भी topic है I would understand it very well, sir. So he was one of my favorites, sir. ओके। अंकित विल बी वेरी हैप्पी हियरिंग दैट। तो ओके। तो ईशानी, अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपका ऑप्शनल आपने मेंशन किया कि एंथ्रोपोलॉजी था। So how did you go about choosing the optional? Many people face challenges कि यार ऑप्शनल कैसे चूज करें। Hmm. मतलब what would you recommend them कि कैसे क्या प्रोसेस होना चाहिए? Since you mentioned you were an engineer but you went for a anthropology optional, right? So how did you go about choosing that? So rightly so, it is a very tough question. Optional क्या करना है? Usually people say कि sources देखो, teachers देखो, क्या easy लगता है, syllabus देखो. These are valid, sir. But my journey for anthro was a bit different. Although I had a CS background, I felt I had a very good bent for anthropology, society, people, culture, tribes. I loved reading about this in as a hobby also, sir. तो मैंने syllabus देखा, I knew that this is something I could stick with for a long time. So the first criteria I would say
can you understand the syllabus and feel like you can write something about it? It doesn't have to be your passion, doesn't have to be something you studied in your past also. It could just be something कि हाँ समझ आ रहा है मुझे syllabus. So um, this I think bulb clicked in me that yes, I could do anthropology, and then I went into the sources, syllabus, how is the paper being structured, and somehow I was quite comfortable with the concept. So even then, anthropology was my stickling point in my mains attempt because उसमें अच्छा नहीं गया था, and then I found other ways to improve it, sir. तो कभी ऐसा थॉट आया कि अगर जैसे आपने मेंशन किया कि मार्क्स अच्छे नहीं आए, डिड यू एवर हैड अ थॉट कि यार इसको चेंज कर लेते हैं, कुछ और ऑप्शनल ट्राई करें? क्योंकि बहुत Not बच्चों at के साथ ये all. होता है. Not at all, sir. अगर मैं optional change कर देती, then I don't think I would have had a solid decision making for anything in the exam. I felt कि मैंने सारा इसको उसका रस निकाला नहीं अब तक. I could go further more, study harder. So I wanted to give it more time, sir. अगर if I had done everything, then I may have changed my optional, sir. But I knew कि और कर सकते हैं, तो तब तक I didn't change. ओके. ईशानी, एक और बड़ा चैलेंज सिविल सर्विसेज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेंस इज द आंसर राइटिंग. कि हम्म ये जो स्किल ऑफ आंसर राइटिंग है, इसके ऊपर हम्म. आपने कैसे काम किया? सर आई फील कि जनरली जब हम जीएस की प्रिपरेशन करते हैं वी आर ऑलवेज गेटिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी इशू इन आवर माइंड, बट द स्किल मीन्स कि कोई भी टॉपिक देखे क्या आप 5-6 पॉइंट्स ऐसे जल्दी से बोल सकते हैं या नहीं, कैन यू जनरेट इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन इमीडिएटली, एंड दिस कम्स इंक्रीमेंटली थ्रू द एंटायर प्रोसेस. सर I feel practice is a very important way to do it, but also when you're studying, don't try to clutter your brain with too many topics. Let's say you read something about Pala art, I would remember just 5-6 points, and whatever be the question on Pala art, I knew I could manipulate this. So I feel that the skill is not just an illusory concept, it is very technical. 5-6 points रखिए, उसको इतना flexible बनाओ कि you can manipulate it very well and keep adding some content here and there, good introduction, good ending. So every subject, sir, has a way of writing. So I think I developed this skill, just important 5-6 points, which I would manipulate in the exam. Okay. Another challenge that aspirants often face, they feel very difficult to decipher it, कि essay का क्या करें? तो essay में how did you go about it? Sir, essay is a very interesting paper because it can actually make your attempt or break your attempt Yes. also. Hmm. And two good essays can take you very far. But I think if you stick to the topic exactly, then it is a very good essay. अगर उसको multi-dimensional बनाओ तो बहुत easily अच्छा लगता है पढ़ने में. But an essay is not a mains answer. So you have to take the reader through a journey. So I would keep certain thinkers, introductions and bodies. एक structure मैं लेके गई थी sir, and I would do it in the exam. जैसे फिलोसफी के टॉपिक्स आ रहे थे, सो आई वुड स्टार्ट थिंकिंग हाउ कैन आई question this topic, why, how, where, when, what. I did this method, sir, but I tried to move away from the socio-political economic, that sort of structure वो भी रखा मैंने, but I tried to think the topic in different lines, sir. This was my strategy. ठीक है. ईशानी, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, so did you come to Delhi or were you preparing for your home? No, sir, I never came to Delhi. I was doing it from Chennai. It's very solitary in my own focused dome, sir. I didn't come to That's very interesting actually. तो घर पे जब आप तैयारी कर रहे थे, मतलब many students feel कि यार एक इकोसिस्टम होना चाहिए, आसपास और Delhi. लोग हों, तैयारी कर रहे हों, तो इट हेल्प्स यू. तो आपको कभी घर पे बैठ के नहीं लगा कि यार मैं अकेले अकेले, मतलब हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? So it's a good question, sir, क्योंकि a lot of people want external ecosystem support कि सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूंगी. But sir, I felt that I was quite academic even when I was in school and college. So I felt that if I was studying alone, it would help me better, sir. But I think any aspirant, they should decide based on their capability of studies. But what kept me going is the focus, the quietness kept me going, sir, that I knew I could focus only on myself. I didn't have to worry about some other competitor कि उसका ज़्यादा अच्छा हो रहा है या नहीं. So I felt like my process was very internal, and I was with my parents also. So I felt that that support was insurmountable. So they kept me going through the exam. तो आज के टाइम पे मतलब क्या आप ऐसा मानोगे कि इन जनरल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन घर बैठ के की जा सकती है फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और ऑनलाइन, यूट्यूब हो गया या बाकी सब चीजें हो गई? डू यू फील सो? But I think it can definitely be done wherever you are. Like I said, UPSC is a democratizer of everything. Opportunity, attempt, your past CGPA, nothing matters. Even where you live and study doesn't matter, sir. Because everything is online now, classes are online, courses are online. But
The problem is when you're living alone, you may not know what is necessary and what is not. Maybe you don't get the right person to person mentorship, but even that is coming अच्छे से सर. The point is इतना content हो जाता है, you just need to be smart enough to know what you should not study in the exam, even if you're sitting away from Delhi. But I certainly think it's possible to study from anywhere, sir. I have done it. Hopefully it'll help others also. So how did you kill your boredom? क्योंकि वहां पे अकेले I'm sure you must had these moments कि तो how did you go about that? Sir, I picked up a hobby, sir, which kept me intellectually motivated, also gave me the right amount of fatigue. कि ठीक है, I can now get back and study. I Hmm. picked up cubing, sir, so I learned that online and I would read Okay. certain books. So I would also invest in sports. So I kept myself going, sir, but the mind space was always that don't let boredom come to you. You have to go back and study. That's the duty for today. So I think I took up cubing and also boxing. So these are some of the things I started to do. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हॉबीज. और हॉबीज पे ना मेरा ईशानी आपसे एक सवाल और है, हाँ जी. क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज इट्स नॉट जस्ट जीएस एंड ऑप्शनल दैट द एस्पिरेंट्स आर वरीड अबाउट, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू आपको डैफ में हॉबीज लिखना होता है. And people usually don't have hobbies, है Yes. ना. And many aspirants come to us कि सर hobbies कैसे develop करें और क्या Hmm. hobbies develop करें which can help us in the interview. So what advice would you give to these aspirants कि how do you go about developing hobbies जिनकी पहले से नहीं होती? Hmm. So it's a good question, but as far as I know, the board does not give you marks just by seeing your hobbies. They see you as a person in totality. So even if you may not have something very a peculiar hobby, they will still like you for just saying things like reading or just walking. A lot of people have written this and also done well in the exam. So artificially inducing a hobby is not the best way because you may get caught somewhere in the interview when they ask you something. It's a tennis ball ka weight or something like that. So because they do go deep into questions to test your hobbies. I feel that focus on studies majorly, but there will always be something you should have allied interests in. It's very easy to pick up something like origami or painting on the side, which you can do just 2 hours a week. That's also a hobby, sir. So it doesn't have to be something you pursue in detail all the time, but anything that you enjoy is a hobby. So I would like to tell them not to worry so much about which hobby to write because the board will not judge you only on your hobbies. राइट. और ईशानी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब व्हाट डू यू फील आफ्टर योर लाइक 3-4 years का जर्नी आपका रहा प्रिपरेशन का, व्हाट रोल डू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव इन एडिंग द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट? So, number one, they democratize the information everywhere. So, you will not feel a fear of FOMO that people say, oh, I'm missing out on something. And number two, online platforms give you content like current affairs. They might give you information here and there on ethics, for example, and all of that. So, that becomes very easy, sir. And number three, you will have confidence that what I'm studying is what every aspirant is also studying. So, they play a very important part today where Delhi may not be the only place that you need to study for the exam, but everywhere else, sir. So I think it has played a very important role for me in my preparation. So I can be very sure that it helps in the preparation altogether, sir. तो स्टडी आईक्यू ने आपकी कैसे मदद करी? तो स्टडी आईक्यू इनफैक्ट नॉट जस्ट मी सर, मेरे घर पे सब देखते हैं जो प्रिपरेशन नहीं कर रहा just because the content is structured so well. So I would see the current affairs generally, जो भी आता था, and I also followed their ancient history courses online. They had put it up, Buddhism, Jainism. I also saw the 2-3 hour videos जो थे, so I've seen all of that. For my interview also, I had followed their social justice videos, their videos on important judgments. So I think it was a very important part of my preparation, sir. Simply because it was detailed. I needed the information जितना चाहिए था उतना था सर एग्जाम के लिए, and that was very helpful, very clear था सर. So you also provide online materials website पे with PDF. So I took a lot of pointers on StudyIQ. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू सेड, क्योंकि ऑनलाइन में ना आई ऑल्सो फील कि एक वेरी इंपॉर्टेंट यूएसपी दैट ऑनलाइन ब्रिंग्स इनटू द प्रिपरेशन इज कि वो कम टाइम में ज्यादा चीज अच्छे से समझाने वाली जो कैपेसिटी है. सिंस आई वाज आल्सो एन एस्पिरेंट वंस 2010 में, आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग. उस टाइम पे ऑनलाइन कुछ था नहीं, एंड यू हैड टू सिट इन दोस 3 hour 4 hour लॉन्ग लेक्चर्स टू हियर ऑल दिस थिंग्स. मतलब ऑफलाइन में तो कोई एस्केप नहीं है कि आप अगर आप बैठे हो क्लासरूम तो आपको पूरा सुनना है, बट ऑनलाइन में यू हैव दिस चॉइस, एंड ऑनलाइन में यू गेट दोस शॉर्ट वीडियोस हर चीज पे, एंड
you can easily absorb the topics. Yes, sir. Like you mentioned, so I would make notes from the videos and then I had time to add my own content. Like I said, I didn't copy paste exactly, but I would research a bit more. Can I add a quotation? Can I add something different? Can I add more statistics? So that structure saved me a lot of time in my general preparation, sir. ग्रेट. तो शानी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि व्हाट विल बी योर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द एस्पिरेंट्स वाचिंग दिस इंटरव्यू? Uh, so there is a lot that I do want to share, but I feel that I want to tell aspirants that my journey has been more tenacious than perseverant. I read the difference of tenacity and perseverance just some time back, and perseverance is someone who keeps going ahead but repeats the same strategy all the time. So that may not guarantee success. It is hard work. But tenacity is someone who is so driven, who is so wild with the goal that they make changes incrementally. So I would say that I have maintained tenacity. I did not give up. I had a lot of confidence that perhaps I would give it my best shot, but I left the rewards away, sir. I focused only on that. So I would like to tell aspirants that do internalize tenacity, have perseverance, but always keep going internal, see your mistakes, be be very confident that you will overcome it, sir. So this is what I want to say. Be tenacious, over perseverant. I think very well said, and very rightly summarized the entire journey of yours. Well, Eshani, thank you so much for joining us, and we all, wish you all the best in your journey ahead as a civil servant. Thank you so much. Sir. I also want to thank StudyIQ for being such a constant pillar of support, although virtually for everything, supporting me in interview, current affairs, and throughout the entire process. Thank you so much, sir. Thank you, Shani. Thank you. StudyIQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.